about? It is a process that leads to devalued, dehumanized and disempowered people from apathy to action. What happened on 2nd of this month, it is the result of that, from empathy to action. So that is the beauty, that is the strength, that is the force of Yogi Baba Sahib's thought. So it is a process. It is a process that has been in the making, that has been evolving and empowering people, awakening people from apathy, from to action, from dependence to independence. We all are so much independent now, not only in terms of our financial standings, but also independent in terms of thinking and psychological independence we have not acquired for thousands of years. It is all because of Baba Sahib. So Ambedkarism, again I reiterate, is a process that leads to the devalued, dehumanized and disempowered people from apathy to action, from dependence to independence, from powerlessness to assertiveness. And again I bring back what happened in Gujarat, how Mewari and people got, how they asserted against such kind of oppressions, and elsewhere what is happening, again, second is before our eyes. That is a kind of assertiveness that had never happened, and Ambedkarism is making it happening in this country. From ignorance to knowledge, from alienation to involvement, from manipulative to self-determined, these are my kind of readings, my assessment, my statement that what Ambedkarism has happened to be, how it has empowered people in such a way that you cannot now take us back to the olden times. This is a revolutionary process that emanates from the philosophy of Baba Sahib, Dr. Ambedkar, embedded in the large opus of his life, thought and actions, manifest in tones of his writings, visuals and voice. In all kinds of forms, what he left behind is based on that revolutionary process, is based on all this what exists today. Ambedkarism as an organized struggle for justice against all the odds and social discriminations that have been faced by historically excluded communities. In the Indian context, it has its least three principal goals. वो तीन प्रिंसिपल गोल कौन कौन से हैं जो अम्बेडकरिज्म हमें उस रास्ते की ओर, सोशल जस्टिस की ओर, लिबरेशन की ओर ले जाते हैं. One is, the first goal is achieving constitutional rights. अभी राइट नाउ काले बादल मंडरा रहे हैं और ये ब्राह्मणवादी शक्तियाँ पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हैं. उनकी पूरी कोशिश है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें बाबा साहब ने दिलवाए हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जाए. अभी SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट जो है उसको डाइल्यूट कर दिया गया है और जानबूझ के किया गया है. अदरवाइज दिस गवर्नमेंट वुड हैव प्लीडेड विद द सुप्रीम कोर्ट दैट यू कैन नॉट टच इट, बट दे इंडीड, their Solicitor General, they did not do anything in that time, and this is what has happened. So all attempts are there to manualize, you see, the present kind of, it's very dangerous omens are there, but nonetheless, I think when I come to the concluding part, now they cannot take, you see, the times back anyhow. So I'm saying, अचीविंग ट्रेडिशनल, अगर तीन गोल हैं इस फिलॉसफी के, इस प्रोसेस के, इस फलसफे के, इस दर्शन के, तो अचीविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सेफगार्ड्स फॉर मेकिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी शामिल है, उनको मीनिंगफुल बनाना ये एक गोल है उस फलसफे का, इस अम्बेडकरवाद का कह लीजिए. और for the people of India, not only for others, but for everyone, making that and achieving, you see, these goals. Second,
सेकंड गोल अम्बेडकर जी की फिलॉसफी का क्या है? एनहाइलेशन ऑफ कास्ट एंड क्रिएशन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। जो बहुत सालों पहले, 650 साल पहले गुरु रविदास जी कहते थे कि वो कैसी सोसाइटी चाहते हैं, बेगमपुरा, द सिटी विदाउट सॉरो। जिस तरीके की कल्पना पहले से भी मौजूद है, लेकिन बाबा साहेब एज एन मॉडर्न थिंकर, एज ए रैशनल थिंकर, एज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, he gave it a very different kind of form and also pushed. So annihilation of caste and creation of an ideal society based on liberty, equality and fraternity, which means social democracy, is the second goal. Economic democracy भी चाहिए. Political democracy, he said, is useless without social democracy, without economic democracy. Third goal, he identified on the basis of this reading on Ambedkarism. Third goal is putting an end to caste economy, class economy and establishing economic democracy. सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और जो राइट्स की बात पहले बात की, तो इस फलसफे के, इस दर्शन के, इस विचारधारा के ये 3 गोल बनते हैं। और ये जो शब्द है अम्बेडकरिज्म जिसको कह रहे हैं, ये काफ़ी सालों घट्टो-घट्ट 20 सालों तो करंसी विच है। पहली बारी ये शब्द वरत्या गया सी आर.सी. प्रसाद की किताब है प्रीफेस टू अंबेडकरिज्म, जिहड़ी 1993 में छपी सी। वो टाइटल दे विच ही है कि दी प्रीफेस टू अंबेडकरिज्म। सो सिंस 1990s ये जिहड़ी इस तरीके का रैकग्निशन है बाबा साहब के थॉट्स ने, उन्होंने बड़ी गहराई गंभीरता के नाल ते गहराई नाल पढ़िया जा रहा है। ਉਹਦੇ बेसिस पे ये गल सामने आई है कि ये अपने आप में एक फलसफा है, एक अपने आप में दर्शन है, ਜਿਹੜਾ दर्शन सीधे का सीधा ब्रह्मवाद जी सोच है वो सामने खलोता है। बहुत सारे अगे किताबें हैं, उन्होंने नाम लैन की लोड़ नहीं है क्योंकि मैं समझदा कि वो उस तरीके का एकेडमिक प्रोग्राम नहीं है। वी आर मीटिंग ऑन ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। बात यह है कि सोशल जस्टिस हमारे लिए बहुत अहम है कि हमारे साथ हमेशा सोशल लेवल पर ही जो उत्पीड़न होता रहा है, और उसके लिए सोशल जस्टिस की जो बाबा साहिब की फिलॉसफी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। व्हाट इज़ दिस? इन फैक्ट दैट बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर डिड नॉट propound any specific definition of social theory of social justice per se. His thoughts are eloquently portrayed in his writings and speeches published posthumously, जो उनकी परिनिर्वाण के बाद छपे गए, उनकी बेसिस पर कह सकते हैं। On the basis of these, we can easily argue that Ambedkar has mentioned multiple principles for the establishment of an open and just social order in general and Indian society in particular. क्योंकि when he talks of he is a universal thinker. हमने कई बार उनको तेज करके रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया है, कई बार हमारे लोगों से भी गलती हो जाती है कि ही वाज ओनली मसीहा ऑफ दलित। ऐसे कोई बात नहीं है, बिकॉज अगर उनके थॉट्स को पढ़ा जाए, विचारों को पढ़ा जाए, तो वो यूनिवर्सल थिंकर एमर्ज होकर आते हैं। किसी खास सोसाइटी की बात किसी कॉन्टेक्स्ट में करते तो हैं क्योंकि वो उनके क्या कहते हैं शरीर पर से गुजरा हुआ जो एक्सपीरियंस है पूर्वजों का है, और इतनी गहराई के साथ उन्होंने स्टडी की है एज एन हिस्टोरियन। मैं तो स्टूडेंट, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और मैं उनके हिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है, स्टडी है, उस पर कमाल मुझे तो ताजुब होता है कि बहुत कुछ ही वाज एवरीथिंग बट आल्सो ए ग्रेट हिस्टोरियन। जब कास्ट को समझने की बात करते हैं, जब एनहाइलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, तो ये बड़ा एक थीसिस है जो जात पात तोड़क मंडल ने उनको प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने के लिए लाहौर वालों ने बताया था। ये जो आर्य समाजियों की एक संस्था थी, जात पात तोड़क मंडल, और जब उन्होंने लिखा, उनको भेजा, और उन्होंने साफ साफ कहा था
कि जब तक जात पात तोड़क मंडल की आप क्या बात करते हैं, जब तक वो धर्म जिसके बेस पर ये खड़ी है, जात पात खड़ी है, जब तक उसका रेस्पेक्ट नहीं करते तो ये बेईमानी है। तो then the organizers had taken great kind of, you see, umbrage against him. He said, not even a comma would I change, because मैं मेहनत के साथ लिखा हूँ, क्योंकि इतनी रिसर्च के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ, what I say I stick to it, and it is out of conviction, it is out of that brilliant intellectual investment that he had produced that thesis. So what I was saying, on the basis of these, we can easily argue that Ambedkar has mentioned multiple principles for the establishment of an open and just social order in general and Indian society in particular. Therefore, with the help of these elements, we can carve out a theory of social justice. Social justice की ऐसी theory आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती, दूसरे रूप में मिलती है जरूर, but what a profound theory of social justice that Baba Sahib produced is something very unique and something which is universally applicable not only on Indian situation but elsewhere as well. अभी मैं लास्ट ईयर बेंगलोर में था, तो बेंगलोर कर्नाटका सरकार ने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई बाबा साहब की अराउंड सोशल जस्टिस एंड सो ऑन, जहाँ से 173 स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड उनको बुलाया गया था। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस शायद दुनिया में कभी नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी होगी, अनलेस जब तक कि हमारी पूरी केंद्र की सत्ता जो है दलितों के पास नहीं आ जाती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आई एज एनीवे thankful to the Karnataka government that they organized such a mammoth kind of conference where Martin Luther King Jr. was also invited. I had also an opportunity to exchange ideas. और 350 के करीब भारत के पूरे इंडिया के स्कॉलर्स भी थे और लोकल तो थे ही। It's such a mammoth kind of conference that was invited. It was organized on around बाबा साहब। So वो जो इन्वेस्टमेंट है, अब लोगों को रिकग्निशन को पता चल रहा है कि कितनी बड़ी ज़रूरत है, विच इज़ यूनिवर्सल। उनकी अपील जो है वो सामने आ रही है और सबके सामने वो रिकग्निशन हो रही है। Therefore, with the help of these elements, we can carve out a theory of social justice. What can then be referred as Ambedkar's theory of social justice? We can extract 5 basic principles from writing. वो social, अब ये बात तो देखिए स्कॉलरली इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया जो बिखरे पड़े होते हैं उनको इकट्ठे करके उनका एग्जामिनेशन करके उनका एनालिसिस करके एक थ्योरी बनती है। तो थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस के ये 5 एलिमेंट हैं, तो वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दीज आर 1. Establishing a society where individual becomes the means of all social purposes. हर इंसान की वक़्त इक्वल हो। Establishing a society where individual becomes the means of all social purposes. Second basic principle इस social theory का है, बाबा साहब की जो social theory है वो है establishment of society based on equality, liberty, fraternity. हमारे यहाँ ना तो इक्वालिटी के नाम पर है ही नहीं, लिबर्टी भी नहीं है, और फ्रेटर्निटी जब वो भावना ही नहीं है तो हमारे सोसाइटी ही जो है हायरार्किकल है, ऑप्रेसिव है और जुल्म से भरी हुई है। थर्ड प्रिंसिपल इज एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, जो पहले भी बात कर चुका हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो उसमें अहम है। Fourthly, establishing democracy through constitutional measures. उन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल डिस्कार्ड नहीं किया है, लेकिन कभी भी कहा कि जो भी अपनी लड़ाई है, जो अपने हक प्राप्त करने हैं, वो
कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ही होंगे, हमारी समझ से पैदा, हमारे अपीलों से, या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जितनी भी हैं, चाहे वो कोर्ट के जरिए हो, चाहे सोशल एक मूवमेंट खड़ी करके उसके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो, चाहे राज्यसभा से हो, लोकसभा से हो, पार्लियामेंट से हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का यही है कि वायलेंट ना होके हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ही, तो ये इनका सोशल जस्टिस का एक ये चौथा प्रिंसिपल है। पांचवा प्रिंसिपल है एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी बाय ब्रेकिंग मोनोपोली ऑफ अपर स्ट्रेटा ऑन पॉलिटिकल पावर। ये जो सांप की तरह इन कुंडलियां मार के बैठे हुए हैं सत्ता के और हर रिसोर्सेज पर, उनको ख़त्म करना और सही मानों में डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश करना, तभी सोशल जस्टिस कायम हो पाएगा। Now everyone we are very in a way, you see, we know all these basic issues कि एजुकेशन पर हो रहा है, क्योंकि नारा ही बाबा साहब का एजुकेशन से शुरू होता है। बट आई विल जस्ट रीइटरेट इट वंस अगेन बिकॉज ऑल्सो इट्स वंडरफुल दैट यू पीपल created, you see, this organization, this society around education. So I must say the road to social justice, अभी ये जो बात की है कि एक थ्योरी निकल के सामने आती है बाबा साहेब के विचारों पर, इन द ओपिनियन ऑफ बाबा साहेब वाज टू बी लेड बाय एजुकेशन इटसेल्फ। एजुकेशन नहीं है तो सारे दरवाजे बंद हैं आपके लिए। एजुकेशन एनलाइटनमेंट लाएगी, एजुकेशन ही आपको रास्ते दिखाएगी। Excuse me all. We have invited someone from India here. Thank you very much for reminding. Unless you want to hear, we have a huge space outside. If you don't want to hear, you can go out. हाँ, ये भी कर सकते हैं। People were trying to hear you. Maybe I think वो बच्चा लोग होते हैं तो ऐसा शरारत करते हैं, लेकिन they can also play out, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इस पर मैंने काफ़ी मेहनत की है ये सारी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, on the basis of my own readings and readings of others, क्योंकि quite often in the discourses ये सारी मनफी हो जाती है, कर दी जाती है। So he firmly believed in the efficacy of education as panacea for the social evils and injustice, because the problem of social injustice in India is not only economic but also cultural है। कल्चरल कैसे है? हमें तो हज़ारों सालों तक जो है लिटरेसी एजुकेशन से दूर रखा गया है, तो कल्चरल प्रॉब्लम हो गई ना ये। हमारी जो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, ये सोशल जस्टिस हमें इसलिए नहीं मिलता कि हमारे पास पैसा नहीं है। अभी तो पैसे वाले भी हो गए, फिर भी वो चीज़ नहीं आती है। He was convinced that nothing could achieve this better than the spread of higher education, and the fact remains as true in the present times as it was when Ambedkar wrote. Social justice, a categorical imperative for establishing social harmony, can be achieved only by a general development and empowerment of the masses of the underprivileged and deprived sections of our society. The poorest of the poor as they are. For this, jobs and education are extremely important, as Ambedkar, as Baba Sahib emphasized. But for Justice Krishna Iyer, काफ़ी radical justice हुए हैं, he says, but for him, Justice Krishna Iyer, equality and homogeneity, the two pillars of social justice, would remain a far cry if the landless Dalit is not given land. It is Justice Krishna Iyer saying that if the landless Dalit is not given land, the penniless pariah is not given opportunity to start small-scale factories, the bonded woman is not liberated from servitude as to enable her to pursue a vocation, and the Dalit youth, often illiterate and disorganized
and drawn into delinquent and destitute situations are given effective opportunities to enter the professional echelons and public services in large numbers. और ये सारा education के बगैर नहीं हो सकता है. And that's why Baba Sahib was so categorical, so clear, so convinced that education was the first and foremost road to the liberation of our people. If education would not have been there, we would not have been sitting here, right, this evening. Regarding Indian society, Baba Sahib felt that if the lower strata of the Indian society, which is interested in blowing up the caste system, is educated, the caste system will be blown up. और आज वही हो रहा है. आज जो हिंदुस्तान में दलितों पर और ख़ास करके दलितों पर, लेकिन मुसलमानों पर भी अत्याचार बढ़ रहे हैं, जगह जगह पर हमारे लोगों पर अटैक किया जा रहा है, वो इसलिए है कि ये सब ऊंचा करके और हमारे सामने बोलने कैसे लगे. और अक्सर ये होता है कि हमें फला अफसर के वहाँ जाना पड़ता है तो उसके सामने हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं. तकलीफ जो है वो इस एजुकेशन का जरिया जो है हमारा बना है, और हमारे लोग उभर के सामने आए हैं, यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर तक बने हैं, और इवन इन दी कोर्स दे हैव अटेन्ड, लाइक क्या नारायण साहब का तो किस्सा पता ही, हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. तो कैसे भी करके ये एजुकेशन ने जो दरवाजे खोले हैं, अब सबसे ज़्यादा परेशानी स्वर्ण जातियों को इस वजह से हो रही है कि ये लोग जिनको हम पाँव की जूती समझते थे और इनका साया तक भी हमें कबूल नहीं था, उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो सूट बूट पहन के हमारे साथ और हमारे साथ ऐसे बात करें, आँख मिला के कैसे बात कर सकते हैं. So that was something really very revolutionary what Baba Sahib thought, especially in the Indian context, but I think which is a panacea for the entire suffering humanity all over the world. So giving education to those who want to blow up caste system will improve prospect of democracy in India and put democracy in safer hands. अभी तो बदमाशों के हाथ में, योगी जैसे बदमाश, आज जब ये सारे जो है बदमाश हैं, और शाह देखो उसको प्रेसिडेंट बनाया हुआ है और उनके हाथ में सत्ता है. आई वॉज इन गुजरात व्हेन दिस कार्नेज अगेंस्ट यू सी मुस्लिम्स हैड हैपेंड, व्हेन दे वर किल्ड, there were mass rapes of women, and I had been in the field, you see, collecting शबनम हाशमी जो है हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, दिल्ली से चल के आई थी, सफदर हाशमी की बहन है, और हम मैं गांव में जहाँ पर गया, आदिवासी गांव में और दूसरे गांव में जहाँ पर मुसलमानों की औरतों के साथ मास रेप करवाए, और ये सारा नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत हो रहा था. हाउ कैन दे रियली समथिंग वेरी इरिटेटिंग. तो डेमोक्रेसी हमारे सेफ हैंड्स में नहीं है. जो बात उसके साथ सोशल जस्टिस और उसके एजुकेशन के साथ ये पूरी जुड़ी, क्योंकि तंदे जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. टू हिम it is very important to educate the poor masses and develop in them a genuine sense of political consciousness and constitutional temper. नहीं तो फिर हम तलवार निकालना तो आसान बात है. तो एजुकेशन ही है जो हमें टेम्परामेंट, राइट टेम्परामेंट समझने का जो एक समझ पैदा करने की, और उसके समझ से पैदा करके अपने हकों को लिए आवाज़ उठाने की जो बात है वो सिर्फ एजुकेशन से ही आ सकती है. Their education means the maintenance of democracy and political order in peace and justice. He thought so highly of education that in his tri-worded slogan, educate, organize, agitate, he gave up priority to it. No doubt about it. And I just wanted to reiterate the importance of education, because I have been an educationist all my life. I have been in the universities for over 4 decades. And I know the importance of it. And I know how the Swarna Jati, even students, they don't like our people to be educated. Especially they would like to see that our people drop, you see, at the school level. And if they come to the colleges and the universities, they try to, in a way, you see, harass them in such a way that they go out of the system. So there is a systematic kind of attempt to keep our people, you see, out
side, but they keep them illiterate, they keep them very lowly kind of educated. So education, and I highly appreciate your efforts to what you have been doing or what you actually want to do but cannot do it because you didn't get the right kind of corrections. They are needy people. There are one income kind of families, they cannot afford, there are number of children there, they cannot afford the children of all the education of all the children. Such people needed needed help from you, and I think I can play that bit. After several decades, I have now relocated myself, or we have come to Amritsar, and since I have been working on the Punjabi Dalit literature and history of our own people, it is another thing that if I want to share my own kind of research in Punjab, what has happened is amazing kind of facts that has come to the fore. Because our history, frankly speaking, I did not have the Dalit consciousness as such for a long time, because our educational system is such that you have the heroes, the upper caste heroes right through the school days and so on. You don't get to this consciousness. It is only very right kind of efforts that individuals have to make to come to Dalit consciousness. And once this Dalit consciousness came into, I stopped working on any other issues, but I say, who would do our history? Who would write our history? Why upper caste would invest in understanding our sociality, our history and so on. And Baba Sahib was right, that if we do not have right connections to our history, if we do not know history, we also will not have a very good future. And that's why, as a historian, as a student of history, I know from very close quarters what kind of evidence, what kind of facts are available in the archives, in libraries and so on. There are few things, there are a number of things, but our people have not been in this mode for a long time. In my own case, I'm saying I did not develop Dalit consciousness till 10 years or 12 years back. Otherwise it was on, I was against communalism. I have been an activist on that front, but I only thought of being a Dalit activist, a cultural activist, only after I got awakened. ये चेतना जब बनती है, चेतना कैसे बनेगी जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारा तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारे लोगों का हुआ है, और वो चेतना जब आई तो then I said no, I would not only work myself but I will awaken scores of other minds to work in this direction. तो ये बात एजुकेशन के साथ जरूर जुड़ी हुई है, लेकिन एजुकेशन हम ले भी रहे हैं, लेकिन कैसा सिलेबस कैसा होता है, कैसा है, वो तो हमारा ये एलीट जो है, अपर कास्ट है, वो हाई कास्ट का ही, चाहे हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, उनके बारे में बात करते रहते हैं. तो दैट्स अनदर काइंड ऑफ चैलेंज व्हाट वी हैव. ओके, ये काफ़ी बातें तो और भी बहुत सारी हैं. मैं वैसे स्पेशली बात करना चाहूँगा कि how Baba Sahib was very concerned about the fate of our women in general, but our own people, communities, women. In fact, in 1942, he was addressing a huge gathering of depressed classes, women, where he said, where he cautioned about all these. Don't get so early, don't produce too many children, and don't keep maintain this hygiene and so on. He was talking to our own women, but indeed he had great empathy, love for all the women of the world. And it was not without that kind of concern that he was so insistent on passing the Hindu Code Bill. After all, he was talking of all the women belonging to all the Hindus, whether upper caste or lower caste and so on, that it is historical that on that basis when these thugs, when these Brahmanical minds thugs, they saw to it that it would not be allowed to even to for discussion. Oh, there was discussion, and they saw to it that it would never be passed. And then desperation and that kind of
highly getting disappointed on this, and it is a historical fact that he resigned from the Ministry of Law only for this reason. So he had great kind of ideas about equality between men and women. He was one of the first few intellectuals who thought of gender equality, and he wanted the women to have the equal share in every facet of life, whether political, economic, or intellectual. It is such a great kind of phenomenon. About democracy, because I have been saying that he was much more concerned about economic democracy than just political democracy or just electoral democracy, and much more concerned about social democracy. And when we got the independence, or when he adopted the constitution itself, because he was the father of the constitution that India adopted on 26th of January 1950, he cautioned everyone, he cautioned the entire nation about the kind of possible play with the tricks that the ruling parties could play with the constitution itself. He said, on the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social economic life, we will have inequality. डेमोक्रेसी तो आ गई, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ गई, वहाँ तो इक्वालिटी आपने शायद पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में ले आए कि everyone had right to vote and everyone had a right also to contest the election. That's fine, fair and well. But he says it is useless. एक स्फीयर में इक्वालिटी होगी, दूसरे स्फीयर्स में इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर्स में इनइक्वालिटी होगी. And he was the person, I think, who was most focused on the equality, because equality was at the center of his thought. Equality was the central question for all the Dalits and all the Shudras in that sense. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to live this life of contradiction. तो ये contradiction की लाइफ से आज़ादी तो पानी, लेकिन contradiction से आज़ादी नहीं पाओ. How long shall we continue to live this life of contradictions? If we continue to deny it for long, ये भी caution किया था ये सत्ताधारियों को तभी, if we continue to deny this it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. खतरे में डाल रहे होंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी अगर इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी की बात ना की साथ साथ में. और मेरे ख्याल गुरदास राम आलम की कविता जी 3 साल बाद लिखी थी, उन्हें आज़ादी वेखी, उदों कहते कि आज़ादी कहदी आई है, आज़ादी तो इन्होंने स्वर्ण जातियों की आई है, साढ़े तो उतरे हुकूमत कर रहे हैं, जो गोरे गए तो ये उत्ते पै गए हैं. तो गल ये कि वो डेमोक्रेसी की वापस है गल 1950 में कर रहे हैं, राइट एट दी ऑन द डे when it was adopted. If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy. एक किड्डी वड्डी प्रोफेसी है कि वो तो प्रॉफिट है ना, प्रोफेसी ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੱਚ ਅ ਪ੍ਰੋਫਾਉਂਡ ਥਿੰਕਰ ਦੈਟ ਹੀ ਸੈਡ ਇਹ ਬਲੋ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ. They blow up the structure of political democracy, which the second thing we are wanting in is recognition of the principle of fraternity. और कहेगा कि हिंदुओं में कभी भी fraternity दी भातृ भाव होना है, भरावां दा fraternity is basically you belong to the same and you treat your neighbors like you and you love thy neighbor. और जब Christianity दा बहुत बड़ा है कि love thy neighbor, वो उस तरीके की भावना की गल कर रहे थे fraternity की. The second thing we are wanting in is recognition of the principle of fraternity. What does fraternity mean? Fraternity means a sense of common brotherhood of Indians. If Indians being one people, it is the principle which gives unity and solidarity in social life. It is a difficult thing to achieve.
वो उन्होंने एडमिट किया कि डिफिकल्ट है कि तुहानू लड़ना ही पैना। मतलब खास करके शूद्रां नूं वड्डियां छोटियां जातां नूं कह के गए कि अनलैस यू स्ट्रगल, अनलैस यू फाइट फॉर दिस सोशल इक्वालिटी, ये तुहानू मिलनी नहीं। आप जो कुछ अज हो रहा वो तुहाडे साडे सारिਆਂ ਦੇ सामने जिस तरीके ने सत्ता हासिल करके वो हर जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के राही अधिकार मिले हुए सी वो भी खोए जा रहे हैं। मैं मेरे ख्याल वाइंड अप करूँगा छेती क्योंकि इन्ना तुहानू थकाउणा भी अकाउणा भी चंगा नहीं। ऑल्दो इनिशियली Baba Sahib was skeptical of delivery of justice to governmental machinery, but later on he preferred the same by having the share of Dalits in the democracy. Share of Dalits democracy which zaruri si. Going by the then existing Hindu social order, he expressed his anguish. अपना बेबसी भी anguish गुस्सा जाहिर कर रहे ने उन्हां दे शब्दां विच ही what he is saying. It might have been brought that the principle of equal justice would strike a death blow to the established order. As a matter of fact, far from suffering any damage, the established order has continued to operate in spite of it. It might be asked why the principle of equal justice has failed to have its effect. The answer to this is simple. To enunciate the principle of justice is one thing. भाई गल करनी वो प्रिंसीपल सिद्धांत जिहड़ा खड़ा करना वो एक गल है, लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो उसका मतलब की रह जाता फिर खाली ड्रामा बजाने वाली गल है। इट माइट बी आस्क्ड व्हाई द प्रिंसिपल टू मेक इट इफेक्टिव to is another thing. Whether the principle of equal justice is effective or not must necessarily depend upon the nature and character of the civil services who must be left to administer the principle. और इंप्लीमेंटेशन वाली मशीनरी की है, ब्यूरोक्रेसी की कर रही है, वो तो बैठे हुए ने सारे। कमाल की गल है कि जेडे IAS अफसर तक जेडे बहते हैं, क्योंकि मैं गल करने वाली नहीं, खैर इन्हों के एग्जामिनेशन वगैरह लैन जाइदा जेडे IAS अफसर बनते हैं। आंकड़ियां की गल करिए तो अजे तक भी खास करके ब्राह्मण ये IAS चीफ सैकटरी एडिशनल सैकटरी ये जफे मार के बैठे हुए हैं। 95% तक वड्डियां जिहड़ियां IAS अफसरां दियां वो हैगियां ने कुर्सियां ने वो इन्होंने संभालियां पईयां। तो हाल वेखो कि 70 साल की आज़ादी तो बाद भी ये साडे परसेंटेज कोटियां की गल करते हैं, वो भी इनएडिकुएट कोटे की, और खुद जिहड़े जफे मार के मोनोपली हज़ारां सालों तो बैठे हुए हैं उन्हों की गल कभी नहीं करते कि तुसी कौन होते हो। IAS ते IPS अफसर जिहड़े आ वो 90% तुहाडे विचों ही होण। ते खैर एनी हो ये कंट्राडिक्शन बाबा साहब बड़ी गहराई नाल गंभीरता नाल सोच के सारी गल कर रहे सन। In the civil services is by reason of its class bias is the friend of the established order. वही गल देखो ये उन्होंने की गल करनी है ना, गल तो है उन्होंने इंप्लीमेंट कौन करेगा। कानून तुसी बना देते, अब कानून दी धज्जियां जिहड़ियां ने हर रोज़ उड़ाइयां जा रही ने हिंदुस्तान दे विच। की हो रहा है 8 साल की बच्ची नाल, क्योंकि वो मुसलमानों की बच्ची थी, तुसी वो धर्म के ठेकेदार पुजारी उत्ते मंदिर विच वो बलात्कार करते उन्होंने मारते हैं टीके लाते हैं। ये कितों ये की है सो इरिटेटिंग दैट यू फील सिक दैट अभी बीमार समाज के विच रह रहे हैं, और उस बीमार समाज को एक कोई हेल्दी पोजीशन में लियाउण वास्ते बाबा साहब ने अपनी पूरी जिहड़ी आ वो जिंदगी ला दी, कुर्बान भी कर दी। Anyhow, if the civil services by reason of its class bias is the friend of the established order and the enemy of the new order can never come into being. नवा समाज नहीं आ सकता जब तक इस तरीके की अकाणी जी वंड आ, एक पासे तुसी लॉ तो बना ले, प्रिंसीपल तो बना ले, सिद्धांत तो बना ले, लेकिन उन्होंने लागू करने की मशीनरी है वो अजे भी तुहाडे हत्थों में है और वो कामयाब नहीं हुई है। दैट इज सिविल सर्विसेज that is civil services in tune with the new order was essential for the success of the new order was recognized by Karl Marx ने 1971 ਵਿੱਚ 1871 ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ I was moving towards concluding parts। I'm saying
Ambedkar's conception of political power was aimed at securing social justice for the deprived on more equitable and honorable terms. वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. He was touching I think he was working on the extremes of the possibilities throughout his life, what he could secure for the security of his own people. But for him, political justice was not enough for the welfare and well-being of the untouchables. He considered social economic justice as the precondition for redeeming political justice. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਕੋਈ ਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. Moreover, his vision of social justice involves a normative element also in as much as it aims at the desirability of goodness in social life, dignity of the individual, equal rights of men and women, promotion of social progress and better standards of life with peace and security in all spheres of human life. बाबा साहेब का फलसफा दर्शन उन्होंने पूरी मेहनत मुशक्कत जिंदगी पर वो चैन नाल बैठे भी नहीं इन्नी मेहनत 18 घंटे काम ही करते रहना एंड नॉट ओनली ही वाज नॉट ओनली व्हाट इज कॉल्ड आर्म चेयर कोई इंटेलेक्चुअली नहीं सी ही वाज एन एक्टिविस्ट ऑल द टाइम. ही फॉर्म्ड इंडियन लेबर पार्टी और ही फॉर्म्ड रिपब्लिकन पार्टी. वो किन्नियां जड़ियां ने वो कोशिश कर रहे हैं हर फ्रंट से trying his best to achieve to translate his ideals into some kind of practical achievements for his people. मैं समझदा कि ये गल्लां होर भी हैगियां सी मेरे जहन विच ते करदा लेकिन समय की पाबंदी मैं फिर तो धन्नवादी हाँ तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ कि तुसीं ये मौका दिता मैनूं अपनी कुछ गल्लां तुहाडे नाल शेयर करन ਦੀਆਂ. I'm very thankful and Jai Bhim, Jai Bharat. I would like to invite Ram Saray ji, Amrit Chand ji, Ramnath ji, Karan Singh, Shashi Paul ji to come here and give a plaque to Rajkumar Das. Vinod Kumar ji. Today we are honoring our key speaker, Mr. Rajkumar Hans, with a plaque, and it says, Dr. Ambedkar Education Aid Society and Ambedkar International Center, in recognition and appreciation of his scholarly excellence and dedicated services to the community, this award is presented to Dr. Rajkumar Hans on the occasion of 127th birth anniversary celebrations of Bharat Ratna Dr. Ambedkar in Hayward, California on April 14, 2018.